Hello and welcome to this third part of the series on democracy. This is the third part of this series on the conditions necessary for successful working of democracy. And before this tutorial, I have covered the 8 other conditions necessary for the democracy, and the link to those tutorial you'll find in the description box below as well as ऑन द आई बटन ऑन टॉप. आप सबका स्वागत है. ये थर्ड पार्ट है डेमोक्रेसी का, स्पेशली ऑफ द कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. और इसके पहले मैंने और 2 ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और एज वेल एज आई बटन के ऊपर मैंने डाल दिया है. तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल, the continuation of the conditions necessary for successful working of democracy. Well, this is the 9th point, and this point is all about an atmosphere of peace. So here democracy can thrive only in an atmosphere of peace. If there are conflicts going on in the country, democracy is not the form of a government for them. People can have a conflict of idea, but no violent conflict. People must have a sympathy for one another and must try to understand sympathetically the point of view of other. Therefore, a sympathetic understanding and a natural tolerance is necessary for the smooth working of democracy. So this point basically talks about that if you need a democracy to survive, if you need a condition necessary for democracy to work successfully, then what you need is atmosphere of a peace. Because if democracy has to thrive, then it is possible only when there is a peace in the society. If people have a conflict, if people are fighting, if people have become violent, then democracy will not survive. The democracy is not for such people who have a conflict with each other. They may have a conflict of ideas, they may have a differences, but they cannot use violent conflict in a democracy. If the conflict become violent, then democracy will never going to survive there. And therefore people must have a sympathetically point of view towards each other. Whatever the viewpoint is, you may have a difference of opinion, fine, it has to be shown with the sympathy. And if there is a sympathy among the people, if people see sympathetically, they have a different point of view, then yes, democracy will survive, democracy will work there successfully. And if people do not believe in peace, if people just takes arms in their hand, then yes, democracy will never going to survive there. हमें हमेशा एक याद रखनी चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है, अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली उधर अपना काम करना है, तो सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पीस. क्योंकि अगर उस सोसाइटी में पीस नहीं है तो डेमोक्रेसी कभी भी सरवाइव नहीं करेगी. डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए व्हाट वी नीड इज़ अ एटमॉस्फेयर ऑफ पीस. शांति, हर तरफ शांति होनी बहुत ज़रूरी है. अगर लोग झगड़ रहे हैं, अगर लोग वायलेंट हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वहाँ पर कभी डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो सकती. अगर लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, अगर लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ है वो डिफरेंट है, and if they don't take arms in their hand, then yes, democracy may survive. because विचार अलग हो सकते हैं, ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन उस ओपिनियन में अगर वो सिंपैथी से एक दूसरे को देखे, एक दूसरे का ख्याल रखे, तो डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है. अगर एटमॉस्फेयर ही गलत है, अगर एटमॉस्फेयर ही वायलेंट है, तो कभी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी. और इसीलिए शांति स्थापित करना बहुत इम्पोर्टेंट है. An atmosphere of peace is very very important condition necessary for the successful working of democracy.
Moving on, next very important point, number 10, is good leadership. Another condition for the smooth working of democracy is existence of a good leadership. The leader in a democracy must be a far-sighted, enlightened, and effective. They should have the personality to lead the country. Great leaders like Winston Churchill, Attlee, Jawaharlal Nehru, Abraham Lincoln, and Washington helped democracy to work successfully. Let me quote Confucius. He said once that the example of those in high places is like the breeze, and the behavior of ordinary people is like grass. When the breeze blows upon the grass assuredly bends in the desired direction. And this is rightly what a good leader should be. Now, this point basically talks about that without a good leader in a democracy will not function very successfully. A leader must have a far-sighted, enlightened, and should have an effective working of a system. A leader should have a personality that leads the country. And therefore we have these examples who have been the great leaders of democracies. We have a Winston Churchill, Attlee, Jawaharlal Nehru, Abraham Lincoln, and George Washington. These people helped democracy to work successfully. And therefore, Confucius have rightly said that the leaders should be like those who are living in the high places. A leader should be like a breeze, and the behavior of the people should be like an ordinary grass. And whenever breeze blows upon the grass assuredly bend in the desire of decision making. That means whichever side the breeze will move, grass will move. In short, whichever side the leader will move, people will follow that leader. And that is a quality a leader must have for any democracies to survive, for any democracies to successfully work. As one of the most important part of system is a good leader. And therefore leader must have a far sight. Leader must take everybody along with himself or herself. Leader must understand the challenges of the democracies. And therefore we have this leader, and there are many such leaders we have around the world who have mobilized the entire population, who have mobilized the entire country to achieve the great miles and a success. And therefore in any democracy, a good leader is one of the most important condition necessary for the successful working of democracy. हमें हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि 10वां जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गुड लीडरशिप। एक लीडर बहुत इम्पोर्टेंट इंसान होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी देश के लिए, क्योंकि उस लीडर की एक फार साइटेड अपनी एक सोच होती है। अगर लीडर एजुकेटेड नहीं है, अगर लीडर को आगे की बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वो कभी भी देश को आगे लेके नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए कि लीडर की जो पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा देश को लीड करती है। और इसीलिए ये जो एग्जाम्पल्स है जैसे विंस्टन चर्चिल, एटली, जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन एंड जॉर्ज वाशिंगटन, ये ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर, अपनी सोच पर देश को आगे बढ़ाया। और इसलिए आज के तारीख में भले वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, वी हैव बीन अ बिकन ऑफ होप ऑफ अ डेमोक्रेसी। और इसीलिए कन्फ्यूशियस ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया है कि जो लीडर होती है वो एक हवा की तरह होती है, वेरी इम्पोर्टेंट। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो ग्रास की तरह होते हैं। जिस दिशा में हवा बहेगी उस दिशा में ग्रास बेंड करेगी। ये ताकत लीडर में होनी चाहिए। और इसीलिए हमेशा समझना चाहिए कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो सबको एक बराबर, एक साथ लेके चले, एक अच्छी सोच के साथ चले, एक अच्छी नीयत के साथ चले, तभी
डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। और इसीलिए गुड लीडरशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन नेसेसरी for the successful working of democracy. Moving on to point number 11, free, fearless, and independent press. Very important. Another important condition is the existence of the free, fearless, and independent press, which is ready to criticize the government. Very, very important. Which is ready to criticize the government when it is going wrong and is not afraid of it. Such a press also creates a healthy public opinion. It informs and enlightens the people and enables them to understand the problems of democracy and discharge their duties and responsibilities successfully. Very important part of condition, in fact, for any democracies to function effectively, and that is free, fearless, and independent press. Yes, press is the most important part of any democracy. In fact, media by and large is considered to be the fourth pillar of any democracy, because it is a media who must play the role of a mirror to the government, a mirror of a society. They must criticize the government whenever government does something wrong. They must compliment the government whenever it does something right. And we need such press to create that healthy opinion. If we don't have that press which is free, fearless, and independent, then we cannot have a healthy public opinion. If press is controlled by the government, then democracy will never going to survive in such countries. Therefore, it is a job of a press that it must inform the people about the things which are happening around the state. They must enlighten the people and they must enable them to understand the problem of democracy. Wherever there are loopholes in the functioning of the government or in the democracy, they must highlight, they must criticize, they must be a part of a constructive criticism of the system. And that is what the most important condition necessary for the successful working of democracy. जब हम फ्री, फियरलेस और इंडिपेंडेंट प्रेस की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि मीडिया जो होती है या प्रेस जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी में. इनफैक्ट मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि जो भी सरकार कुछ कर रही है देश में, सोसाइटी में, उसको हमेशा लोगों के सामने रखना, वो उनका काम है. जब भी सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसको प्रेज़ करना वो उसका काम है, और जब भी सरकार कभी गलत कुछ होता है, गलत कुछ करती है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना वो उसका परम धर्म है. अगर प्रेस ये नहीं करेगी तो डेमोक्रेसी कभी सर्वाइव नहीं करेगी. देयरफॉर फॉर एनी डेमोक्रेसी, इफ डेमोक्रेसी नीड्स टू थ्राइव, इफ डेमोक्रेसी नीड टू वर्क सक्सेसफुली, तो पूरा प्रेस के ऊपर रहता है. और इसलिए प्रेस हमेशा फ्री, फियरलेस और इंडिपेंडेंट प्रेस होनी चाहिए, सो दैट इट कैन क्रिएट द हेल्दी पब्लिक ओपिनियन. अगर एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन तैयार करना है तो पूरा काम प्रेस ही कर सकती है. अगर प्रेस को स्टेट ने कंट्रोल किया है या प्रेस को अगर सरकार ने कंट्रोल किया है तो वी कैनॉट हैव अ हेल्दी ओपिनियन अबाउट द सिस्टम. और इसीलिए प्रेस को हमेशा अपना काम करना चाहिए टू इन्फॉर्म द पीपल of all the activities of the government, to enlighten the people or to enable to understand them the real problem of democracy. And that is what the free, fearless and independent press is supposed to do for the democracy. And therefore this is the most important condition necessary for the successful working of democracy. And moving on to the last point, 12th point, balance in the structure of society. Well, balance in the structure of society is a prerequisite
to the maintenance of a democracy. This means that no power group should be allowed to exert undue pressure on the functioning of the government, and therefore, alert and vigilant public opinion can serve as a necessary check. Very important that for any successful working of a democracy, what we need is a balance in the structure of society. And this balance in the structure of society is a minimum requirement or prerequisite to the maintenance of democracy. And why do we need to have a balance? It's only because many a time there are pressure groups which want to put pressure on the government to get their work done or to get the policies in their favor. And such groups always hijack the functioning of the government. And therefore, if we have an alert and vigilant public opinion, and therefore if we have a free, fearless and independent press, and therefore if we have that thrive for a democracy, and therefore if we have a good leader in the public, we can act as a check against such groups who wants to pressurize the government to get their work done. And therefore we need to understand that the alert and vigilant public opinion can serve as a necessary check for such groups and for the welfare of the society. हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सोसाइटी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जो बैलेंस होता है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में आप देखने को मिलेगा। और जो बैलेंस जो होना चाहिए वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बैलेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है बहुत बार कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर लॉबीज़ जो होती है, वो हमेशा सरकारों के ऊपर प्रेशर डालती रहती है अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, और ज़्यादातर सरकारें उस प्रेशर के अंदर इतनी दब जाती है कि कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं विच बेनिफिट्स ओनली टू दोज प्रेशर ग्रुप्स। और अगर ये स्टॉप करना है, अगर आपको सरकार को और एम्पावर बनाना है, तो इसका जो दारोमदार होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोगों के ऊपर रहती है। इसलिए हमें अलर्ट और विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन चाहिए। अगर ये अलर्ट और विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन तैयार करना है तो हमें फ्री, फियरलेस और इंडिपेंडेंट प्रेस चाहिए, हमें अच्छे लीडरान चाहिए, और हमें एटमॉस्फेयर ऑफ पीस चाहिए। तभी जाके आगे कुछ अच्छा पब्लिक ओपिनियन बन सकता है। और इसीलिए balance in the structure of society is a necessity and a most important condition for the successful working of democracy. So this is all about the 4 most important conditions necessary for successful working of democracy. So feel free to comment in the comment box, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.